shifts, and changes. So, welcome to Quanto Life. Our founder of Quanto Life is Quanto Shivo. We are truly grateful to him for bringing us this unique path. And co-founder is Quanto Mansi, who's the heart space of this foundation. And now, let me tell you about the Shrawan Mahotsav, which is going to be there for 3 days. It's connected. All 3 days are connected to each other, and see to it that you attend all 3 days to get the greatest benefit. And after the 3 days program, from 4th July onwards, for 21 days, we will be having the Panchbhut sessions, which we will tell you more in detail tomorrow. You're welcome to join it once you get more information. The person who's going to be conducting is Quanto Atin, who's a founding member of Quanto Life. He's from Ujjain, the city of Mahadev. He's a liberation coach who also works as a holistic wellness coach with different modalities, including yoga, astrology, tarot, nature cure for physical, mental, and spiritual well-being. At present, he's the person who helped to bring in the 84 Mahadev project under, again, Quanto Life, with the guidance of Quanto Shivo and Quanto Mansi. Welcome, Atin. Please take it from me. Am I audible? Yes. Okay. Pranam sabhi ko. Thank you for joining this divine space of Mahadev, this divine space of Quanto Life. And there are so many new faces in this session, and I really grateful from my bottom of my heart to you all for joining this session. So let us begin. Um, so let us begin because as we talking about Shiva, and when we talk about Shiva, when we talk about the Shravan, when we talk about the story of Shiva, and so we in our mind, many times to most of us, it comes the Abhishek, how we offer the jal to Mahadev, how we do the puja, how we in our mind come the Mahakal, Ujjain, in our uh, various tirthas, Omkareshwar. These tirthas come in our mind basically. So Ujjain is the one of the place. You all know that in Ujjain there is a Mahakal temple. You may heard about the Mahakal corridor, and so many people are visiting since the Mahakal corridor has developed. So in Ujjain there is a Kumbh Mela also, because Ujjain is the Tirth Sthal. So the Tirth Sthal has the many Shakti and Shiva places, and this is the technology basically. So today we are talking about in terms of mythology, in terms of technology, in terms of science, in terms of astrology, and in terms of the spirituality, the deep spiritual experience. So these tirth is developed. Why this tirth developed? India is called the spiritual land of the earth. India, so many people come here, for the spiritual liberation. So today we will, in these 3 days, we are going to dwell into deeply how these tirth, how these unique temples of Shiva anywhere in the world, or India, especially
the temple which are thousands of year old, which has the some story related to some devas or Shiva himself. How this temple transform us, our whole life. How this temple, how the Shravan Mahotsav or the worshiping Mahadev help us in the physical, mental, and spiritual well-being. So when it comes to Mahadev, it it comes to meditation. So let us begin by a small meditation, and in this meditative state only, we will do whole session. So Shiva is about meditation. So you may, so this we will, so this is the whole lesson, the whole teaching, the whole, even the many masters, even in Osho, our Quanto Shivo, Mansi, the guru of Quanto Life, any guru, whoever speaks, or the Mahadev is the Adi Yogi of meditation. So the purpose, primary purpose of speaking, the primary purpose, all the holy temples, primary purpose, all the tirth in India, or any deep religion or any deep science, primary reason is, the primary purpose is so that we can connect with ourselves. So we can go into silence, we know ourselves, and we achieve the highest potential of human being, that is by knowing ourselves. So let us start by meditating. I request you to please close your eyes, sit straight, keep your palm facing upward. You may be feeling already the silence of Shiva, because this session is of Shiva. He is only guiding. He is the only guiding light for all of us here in this session. So let us experience him and flow with him in this session. I request you to feel the gap between two worlds. That is the space which is the invocation of Shiva. The space around you, that is the space which touches the infinity, where all the stars and galaxies, earth, humans, all the devas, asuras resides. This is the Shiva, the Shiv Tattva. And all the movements, the earth, the star, the birds, the humans, is Shakti. And when this Shakti align with Shiva, that is where the celebration happens. So I request you to feel the space around you, the space between the words, and the space within you. All the thoughts and emotions floating in the Shiv Tattva. Let us be with it for a few seconds. In this Shiv Tattva,
we invoke the quantum vibration field. It can be new for you, but as you say 3 times, you all experience the vibrations. Want to feel the shift into the space. Quantum. You may be feeling or may not be feeling the shift, but the field is there around you. Quantum. Just be with these blessings of the field which emerged from Shiva himself by our beloved master, Quanto Shiva and Master. Let us be with a few seconds and then we'll open the eyes. And I will request you all to be in the space of silence and Shiva in the whole session. Now, with total awareness, we'll open the eyes slowly. So, pranam sabhi ko. Let us be in this silence. Remain aware about the space around you, which touches the sky and the space within you, which also touches the infinite. So, this space, which is Shiva himself, is the space from infinite to infinite. Let this session be the experience of this infinite dimension. Whenever you feel the silence, this is the Shiva talking with you. So be in Shravana. The Shravan, the word Shravan is the Sanskrit word, and Shravana is also a nakshatra. The Shravan, the word Shravan month come from there. In this Shravan month, also the churning happened, the Samudra Manthan. And when we become aware about this space, when we ground ourselves in this space, the Shravana happens. And when this Shravana happens, the Samudra Manthan, the churning happen within yourself. And when the churning happen within ourselves while grounding in Shiva, the Shiva Tattva, like
in the journey, all the treasures and the poisons come out. In the same way, when we remain in the state of Shravan, all the talent, the skills, the qualities, whichever the soul carry, which is its unique potential, it started coming out. Also, the poison also come out. This poison is the karma, the subconscious, the good and bad habits, the pain, the sufferings, which happens to soul in the journey life after life. It start coming out in the state of Shravana. And the Shiva drink it. It is not the poison which Shiva drank during that churning, but he is constantly drinking that poison when you are in the state of Shravan. And all the karma, all the subconscious, all the pain, the suffering, Shiva drinks. So so this is the state, this is what we call the Shravan Mahotsav. When all the churning happen within you, all the gold and all the skill come out in the state of Shravan, all the poison come out. And when you get the liberation, that is where the Mahotsav happens. So in these 3 days and in 21 days, we are going to experience this Mahotsav where the Shiva will drink all our suffering and the poisons, which is leading our life to different situations. तो जब शिव जी पॉइजन ड्रिंक करेंगे, हमारा जो सफरिंग है, जब हम इस श्रवण के अवस्था में रहेंगे, तब ये श्रावण महोत्सव होता है. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टेट कैसे प्राप्त होती है. डेफिनेटली जब हम लोग इस स्पेस पे आते हैं, तो क्या बाधा है हमारी कि इस स्पेस में कनेक्ट होने की या इस श्रवण की अवस्था में. क्योंकि आप देखेंगे जब हम 84 महादेव की बात करते हैं, when we talk about 84 Mahadev, Shiva told all these 84 stories to माँ पार्वती. शिव जी ने ही माँ पार्वती को ये 84 स्टोरी सुनाई थी, विच इज द स्टेट ऑफ श्रवण, सुनने की अवस्था. तो उसमें क्या बाधा है, व्हाट इज द हर्डल्स, सुनने की अवस्था में क्या बाधा है. तो बाधा है इम्प्योरिटी, डिसबैलेंस. तो पहली बाधा जो आती है वो शरीर रूपी आती है, द फिजिकल बॉडी. द फर्स्ट हर्डल इज फिजिकल बॉडी. तो उसका राज जो छुपा हुआ है वो इस शब्द में छुपा हुआ है, ओम नमः शिवाय.
Om is the soul, is the omnipresent sound, which is our own state also, जो हमारी भी अवस्था है. और नमः शिवाय is the denoted represent 5 element. जो नमः शिवाय होता है वो पंच तत्वों को बताता है. तो न जो वर्ड है वो बताता है अर्थ एलिमेंट, म बताता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व, ह बताता है न म ह, ह बताता है अग्नि तत्व को, शी बताता है अग्नि तत्व को, पा बताता है एयर एलिमेंट विच इज वायु तत्व, तो या बताता है ईथर एलिमेंट. तो जब इनका इम्बेलेंस होता है हमारी लाइफ, तब एक इम्बेलेंस होता है, इम्प्योरिटी आती है. दैट्स वाई जब हम अभिषेक करते हैं महादेव का, जैसे आपने देखा होगा, वेन एवर वी गो एंड डू द अभिषेक ऑन शिवा, सो वी डू द पंच तत्व अभिषेक, रुद्राभिषेक. तो ये अभिषेक क्या है बेसिकली, और जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, द थिंग विच आई एम शेयरिंग विथ यू, एंड कीप on being aware about the space. So what I am sharing with you is what I get the experience in the Shiva temple while sitting in Shiva temple. So when there is an imbalance in this body, because this body is the technology, जहाँ से हम लोग हिटलर भी बन सकते हैं और हम लोग इनलाइटन भी हो सकते हैं, हम बुद्धा भी बन सकते हैं. सो ये जब इस शरीर में इम्बैलेंस होता है, so that is called the imbalance in the body, and where there is need of abhishek, basically the consciousness, the awareness. So the one of the master Osho says that there is only one sign, that is unconsciousness, and there is only one virtue, this is consciousness. इसका मतलब है केवल एक ही पाप है unconsciousness, और एक ही virtue है consciousness, होश और बेहोशी. So let me cover quickly these 5 elements and how we connect with this 5 element in this Shravan Mahotsav. So this is in sequence. देखो जैसे आकाश से आया, आकाश तत्व से आया वायु तत्व, वायु तत्व से आया अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से आया जल तत्व, और जल तत्व से आया अर्थ तत्व, द अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व. तो जब हम लोग इसके अवेयरनेस लाते हैं, क्योंकि हम लोग पंच तत्व के बने हैं, और जब हम लोग, तो दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. तो हम लोग पहले आते हैं फिजिकल वेलबींग, क्योंकि फिजिकल वेलबींग मेंटल वेलबींग से कनेक्टेड है. तो कैसे हम इस श्रावण महोत्सव, इन द स्टेट ऑफ श्रवण, हम कैसे इस पंचभूत से, 5 एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड शिव आराधना. जब हम अवेयरनेस से दिस पंच तत्व से कनेक्ट होते हैं, विद अवेयरनेस वी कनेक्ट विद द पंच तत्व, when we aware, become aware about these 5 elements we called body, the balance start happening. That's why you must have seen in yoga, awareness take a very important part, basically, because when you each asana, when you be aware about the parts of the body, कुछ भी आपका दुख रहा है, कुछ हो रहा है, तो just be aware during the asana. When you bring that air element, when you bring that breathing, when you bring that awareness into that part, automatically it is all resolving. Why? Because जहाँ पे भी होश जाता है वहाँ पे प्योरिटी आ जाती है, और जहाँ पे भी बेहोशी आती है वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. So the awareness is the primary thing to balance our Panchbhut Tattva. So even in meditation, when you meditate, your Panch Tattva get balanced, basically. So how we connect with this Panch Tattva in this, let me give you one example, and then in details, and we will do the Panch Tattva Abhishek, Rudra Abhishek, Psychic Abhishek in the meditative form in the 21 days sessions. So how you connect? Are you
I ask all of you the question: are you connecting with this 5 element in your life, in your daily life, basically? So how you connect with the earth element? अर्थ एलिमेंट से कैसे कनेक्ट करते हैं? और जब हम लोग नेचर केयर की बात करते हैं, तो ये सारे ही इसको बोलते हैं फूड इज योर मेडिसिन, फूड मेडिसिन है। तो ये 5 तत्व ही आपके मेडिसिन है, और ये फूड है 5 तत्व। तो कैसे हम प्यूरिफिकेशन करेंगे एक एक एलिमेंट का, और हम लोग आज में प्रैक्टिस भी करने वाले। तो स्टे हियर, विल डू प्रैक्टिस। तो अर्थ एलिमेंट से हम लोग कनेक्ट करेंगे कैसे? So this is the physical dimension we are talking about. And what I want to say is, जब भी कोई मास्टर, जिसे मैं गुरु जी कहा करते थे, डॉक्टर बुतोड़िया अंकल, कि जब भी कोई ज्ञानी नियम बनाता है, कोई भी ज्ञानी, सिद्ध हो गया, कोई मास्टर हो गया, कोई ऋषि हो गया, मुनि हो गया, तो जब भी कोई सिस्टम बनाता है, कोई भी सिस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो भी कोई सिस्टम बनाता है, वो वो सिस्टम जो प्राइमरी गोल होता है, वो सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है टू नो योर सेल्फ। यू नो, जब भी भगवान आपके लिए, भगवान जब, क्योंकि जो जिस वाइब्रेशन फील्ड में, जो जिस स्टेट पे रहेगा, वहां से वो वर्क करता है। सो व्हेन यू आर वन विद गॉड, सो योर प्राइमरी पर्पस इज सो दैट ह्यूमन अचीव दैट डायमेंशन। सो वो जो गुरु होता है, जो ऋषि होता है, मुनि होता है, जो भगवान होते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप उसी स्टेट को पाओ, खुद को जानने की स्टेट को पाओ। तो उस जानने की स्टेट के लिए नियम बनाए जाते हैं, समाज के नियम बनाए जाते हैं, किसी धर्म के नियम बनाए जाते हैं, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम बनाए जाते हैं, ताकि वो नियम आपको सपोर्ट करे टू अचीव दैट स्टेट। तो प्राइमरी जो पर्पस होता है, कोई भी मास्टर, गुरु, इनलाइटेंड बीइंग, देवता, भगवान जो भी सिस्टम बनाते हैं, तो प्राइमरी पर्पस बॉडी नहीं होता, फिजिकल बॉडी नहीं होता है, बट ना कि मेंटल स्वास्थ्य होता है, बट द मेंटल वेलबींग एंड द फिजिकल वेलबींग इज द बाय प्रोडक्ट of that system, right? So I was talking about the earth element, basically, which is for the physical well-being. So how we connect with the earth element? When we become aware about the body, physical body, when we do yoga. Okay, so when you do yoga, and with awareness, when you do yoga, so you are moving your body, when you are walking on the grass, when you are running. Okay, so you are stimulating your earth element, you are stimulating your organs, basically. So you are connecting, you are stretching it and contracting it, right? So you are walking on the grass, तो any physical activity, अगर आप बैठे हो, केवल still बैठे हो, तो you are not connecting. When you are moving, basically, so you are connecting with the earth element. Plus, when you are having food, because we are made up of 70% of water. So when you are having food, because जिस तत्व की बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर चेयर बनी हुई है लकड़ी की, तो आप उसको अदर एलिमेंट से उसको उसको उसके ही बनेगी वो चेयर, उसको आप फिक्स कर सकते हो, बट वुड की बनी। तो हम लोग जो पंच तत्व के बने हैं, तो वही हमारी मेडिसिन है, राइट? तो जब हम लोग अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो जब हम लोग 70% वाटर बने, तो अगर ऐसे फूड खाते हैं जिसमें 70 to 90% ऑफ वाटर है, so that's where we are connecting to the earth element for the physical body, for the well-being. So the more you are having the fruits and vegetables which is having more amount of water, fiber and life, which, so that will support you in the physical good health. That is the one type of. The second type of thing which you can connect in the Shravan Mahotsav. So I will talk about Upvas also. So the second thing which we connect is the the water element. How you connect with the water element? तो इसमें ऐसा ही नहीं कि how you are connecting, how you are approaching it, basically. How you are approaching the earth element, any object, how you are approaching. मैंने कुछ सामान भी उठाया है, तो मैं उसको अप्रोच के, आपका भाव कैसा है वो भी डिपेंड करता है उससे। क्योंकि मुझे मतलब मुझे ध्यान में एक, तब जो शेषनाग जी हैं, जो मुझे इष्ट है, उन्होंने मेरे को बताया था कि कैसे शरीर से ऊपर से नीचे तक स्कैन किया जाता है। तो आप अगर प्रेम से ही अगर शरीर के ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हैं बॉडी को, दैट इज ऑल्सो यू कनेक्टिंग विद हर, एंड यू आर गिविंग लव टू ईच सेल ऑफ योर बॉडी। तो जैसे अगर आप अपने आप को लव देंगे, खाने के बाद भी अगर आप बैठ जाएं और आप अपने शरीर को ऊपर नीचे से स्कैन करें, और जस्ट फील दैट यू आर स्कैनिंग फ्रॉम योर हार्ट, तो यू विल फाइंड आउट कि आपके प्रेम का इंतजार कर रहा था आपका सर, आपकी नाक, आपकी आंख, आपकी लिप्स। आपने कभी प्रेम दिया है उसको, आपके शरीर को?
So start giving love to your body. So that is where you will connect with the earth element, and that will give the help. क्योंकि जिसको प्रेम दोगे वो कभी बंदा नुकसान कर ही नहीं सकता आपका. प्रेम, नॉट अटैचमेंट, जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं. आपका बुरा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. इस संसार में कभी जो प्रेम देता है उसका कभी बुरा नहीं होता है. बट इट हैज टू बी लव. So this is the earth element. The second is water element. The water element, how you connect with the water element? When you having again the fruit and vegetable which you are having, क्योंकि water में भी minerals होने चाहिए. So when you are having fruits and vegetable which has 70% of water, and it will give all the nutritions which you needed. Sorry, minerals which you needed in the body, and definitely all the carbs and everything you will get, because the nature has given in the exact proportion which your body needed. Plus when you have the water sip by sip, okay, how you are taking the water, how you approaching the water. क्योंकि हम लोग चरणामृत अगर हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को, तो इट हैज द मेमोरी ऑफ गॉड बेसिकली, राइट. क्योंकि हम पंडेरे में क्यों दिया लगाते हैं, उस भाव से लगाते हैं कि उस भाव, क्योंकि पानी का भी जीवन उसमें मेमोरी है. वाटर इट इज अ इमोशन, मोशन, वाटर रिमेन इन मोशन. तो पंडेरी को दिया लगाए ताकि उसमें भी वो ऊर्जा आए बेसिकली. तो व्हेन यू हैविंग द वाटर sip by sip, when you're having this type of fruits, you are connecting with the water element. Definitely, how, when, what to do, this has to be known properly, then only. Otherwise, it will not work. The third water element, the fire element. How you connect with the fire element? Sun gazing. Sun gazing is the wonderful way. जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जब sun को आप देख सकते हैं naked eye से, so then you are connecting with the sun. Or definitely you know the vitamin D and all, we all know. So when you are connecting with the, even if you are going out and having the sunlight in your body, अगर आप कमरे में बैठे हैं, आप IT प्रोफेशनल हैं, कुछ भी हैं, अगर आप घर में बैठे हैं, अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो go out and have some exposure of sun. Definitely not the which burns you, but the light through. So this is what the sun, and there is a solar therapy, there is a water therapy, hydrotherapy, is a whole science of it. So we can talk in details in the coming session. How to connect. And then comes the air element. Definitely air element, how you do pranayam, the deep breathing. We all know the importance of deep breathing. We all know the importance of breathing. The pranayam, the conscious breathing. And we all know the magic breathe is connected to our emotions and body. So we know that हम बोलते हैं ना कि calm, you just take a deep breath. Why we say? Because the more the slow and steady breathe is, the more your mind will be slow and steady. You will be more calm. So you will find out that whenever you are angry and everything, we all know that our breathing pattern become fast, you know and uneven. So just bring awareness. Are you bringing, are you taking awareness of your breathing coming in and going out? Are you doing the pranayama? So that is how you connect with the air element. And there is whole over the therapies of all these things, treatment therapies, the bigger and the small disease you can come out. Then the space element, and it's called the Langhanam Paramoshadam. The space is the highest potent. So how you connect with the space element? The fasting, the fast. The thing you do fasting in the right way, you break fasting in the right way. उपवास का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा अभी. फास्टिंग हो गया, deep sleep हो गया, which is very much required. That is also a space element. Then meditation, that is also a space element. And then the Shravan, this is also a space element. When we are not doing anything, basically, when we are in the state of space. Okay, so when you are meditating, when you are having the improper sleep, okay, so you are connecting with the space element. When you are fasting, so Langanam Paramoshadam matlab fasting is the greatest medicine. तो अगर आप फास्टिंग प्लस ये एलिमेंट से कनेक्ट होते हैं एवरी डे, तो यू रिमेन हेल्दी. दिस विल प्यूरिफाई योर बॉडी, दिस विल bring balance to your body, and the first Shravan start happening. That means the body start listening to, speaking to you. The body knows what it needs, but there is a block, there is a imbalance. That's why
we stop listening to our body, or we not able to listen to our body. So when we connect every day with this 5 element, we get purified and we reach to the first state of Shravana, which is the state of bodily Shravan. Now, what I'm telling you, the primary purpose is to be one with divine. So when your body is in the state of purification, in the state of balance, now you are ready to connect with Shiva Tattva. You are ready, because when you are not paining, your body is not paining from anywhere. When your mind is calm and composed by the right food, then your anxiety will be gone and you will be able to go into meditation deeper and deeper. So if you are having the problem of meditation, if you are having the anxiety and everything, check your food. Check if you are connecting with the 5 element or not every day. If you start connecting with the 5 element, you will come into the state where your body, the machine body, which is machine, is the state where you can go into silence. You understand? अगर बॉडी अगर भगवान ने बनाई है मेडिटेशन के लिए, तो वो उसकी उसकी कैपेबिलिटी, उसकी टेक्नोलॉजी है, बट वो टेक्नोलॉजी क्यों वर्क नहीं करे, क्यों हमारा मन चल रहा है, क्यों नहीं कर रही? देयर इज ए इम्बैलेंस in your breathing system, in your physical system. There is imbalance. Create the balance, and you are ready to connect with Shiva. So whenever you say Om Namah Shivaya, so remember, are you connecting with the 5 elements? Then you are ready to connect with the Shiva. And tomorrow we will going to talk about how we connect with this 5 element in the temple. What are the rituals in the temple we follow? What are all the rituals we'll follow? How to follow these rituals so that we can connect with the Shivalinga. आपने देखा होगा कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो बैठते थोड़ा सा बैठते इसलिए नहीं कि भगवान को बोल दे के कि हम आए थे तो यू रिमेम्बर अस। बैठे क्योंकि जो आप उस सिस्टम का, क्योंकि मंदिर एक सिस्टम है मेडिटेशन के लिए, स्पेशली शिवा टेम्पल, this is the system has developed so that you can go within yourself, and the ritual which is developed so that the Shivlanga get preserved and your Panchatattva get balanced. That's why we talk about Panchabhut, Panchatattva, everything, Panch term in the Shiva temple. To use Panchatattva get balanced, why the rituals, different ritual, which we're talking about tomorrow. So that when you do that ritual, the body will come into the state of silence, and then we say a bedtime. So when you apply this ritual rightly, then you will be in a state of silence, and then you can say क्या bedtime. और आप जब कल हम लोग इस सेशन में करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। और मेरा भी बदला था जब मेरे को शिवो सर ने, जो क्वांटो लाइफ के जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमको जब मुझे सिखाया था, मैं कभी मंदिर नहीं जाता। जब मैं जो उनको सिखाया कि ऐसे अतीन ऐसे बैठते हैं, उस दिन से मेरा लाइफ बदल गया। तो जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि इच्छा मूर्ति हनुमान जी या गणेश जी या दिस महादेव टेम्पल, दिस टेम्पल यहाँ पे होता है, तो एक्चुअल में होता है उधर, बट हमको उस सिस्टम में उतरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कल होगा, उसी मोमेंट होता है, राइट? उसी मोमेंट आप कभी भी जब इस टेक्नोलॉजी को आप समझोगे, क्योंकि आप देखिए, अगर कोई टेक्नोलॉजी मास्टर से बनाई है, अगर कोई टेक्नोलॉजी ऋषि ने बनाई है, तो वो वर्क करेगी। अगर कर नहीं रही है टेक्नोलॉजी काम, तो इसका मतलब है कि हमने गलत समझा। उस टेक्नोलॉजी की कोई भी गलत नहीं रहती। दैट्स व्हाई वी फील कि हम वी मे बी वी दैट्स व्हाई यंगस्टर मे बी sometime not go to temple, because we have not explained the technology. When we explain this technology, जैसे हम नहाते हैं, तो नहाने में कोई थोड़ा ना पूछता है कि why we are taking bath. Do we ask कि ब्रश क्यों कर रहे हैं? Do we ask? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को हम बचपन से सिखाते हैं बच्चे, कि बच्चे नहाओ, हम किताबों में पढ़ाते हैं। वो उसका ये नहीं पूछता है क्या साइंस है उसके पीछे, नहाने के पीछे क्या साइंस है, क्योंकि उसको अनुभव में होता है वो साइंस, कि गंदा हो जाऊंगा, उसको दिखता है मैं गंदा हो जाऊंगा। और आप देखेंगे कि जो पागल घूमता है बाजार में, वो कैसा हो जाता है। हमको दया आती है कि वो नहाया ही नहीं इतने समय से, उस पर खुजली होती है, वो मर जाता है ऐसे सड़ते सड़ते,
क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भूल गया है। और आपको मैं बता दूं, हम भी इसी तरह के कहीं ना कहीं ये दुनिया, जब हम इस टेक्नोलॉजी को भूल जाते हैं, तो हमारी मनोस्थिति भी वैसी हो जाती है जो उस पागल की बाहर से है। हमारे कर्मों के रूप में, हमारे मन के रूप में वो भीतर से वो स्थिति हो जाती है। दैट्स वाई हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं चिड़चिड़ हो जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं काफी लोग जैसे बड़े होते हैं, हमारा लाइफ एक दुख की पीड़ा का कहानी बनती चले जाती है। क्यों? क्योंकि वो भीतर की जो सफाई की जो टेक्नोलॉजी थी, बेसिकली जो हम हमारे को ऋषि मुनियों ने दी थी, हम उसे भूल गए। So this is where we talking about. We tomorrow we'll talk about, and we will not come empty-handed from the temple. Uh, yeah. So this is the purification happens, and it will give you the physical. तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऋषि मुनि कोई भी सिस्टम बनाता है, तो फर्स्ट the understanding of the system you will remain healthy. आपको फिर आपको मेंटल के लिए आपको वहां पे नहीं जाना पड़ेगा कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। आपका जो सिस्टम है वही आपको इतनी कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जिसका आपका फिजिकल वेलनेस आपकी हो जाएगी, और फिजिकल वेलनेस के साथ मेंटल वेलनेस जुड़ी होती है। व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज कनेक्टेड? बिकॉज आवर गट, वी ऑल नो, बेसिकली पेट से ही सारी बीमारी आती है, वी ऑल नो, इट इज अ वेरी कॉमन नॉलेज। इन आवर गट इज द सेकंड ब्रेन, वी ऑल नो, gut is our second brain. So when the gut is not correct, which is the body, the mind will not be in the stable state. Again, the imbalance, and which hinder you to connect with the Shravan state or the meditative state. And why it is happening? Because we talk about all the microbiomes and this, all we talk about. That's why you will find that those who are following the sattvic diet, this is Krishna one, what the sattvic vicharate, tamasic. It is happening because when you are having sattvic diet, so your gut bacteria will be right, and the gut bacteria where the mind will function well. Why gut bacteria? Why? तो जैसे हमारी शरीर है तो ये पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन फूट जाएगी तो क्या होगा? किसी मकान से बदबू आएगी। तो ये जो जो गट है, जहाँ पे हमारे तीन चक्र है भीतर के, जो हमको फियर, एंजाइटी, जो भी हमारे कर्म है लाइफ आफ्टर लाइफ, वो उसमें स्टोर्ड है भीतर के। फिर हार्ट चक्र आ जाता है, फिर हायर चक्र आ जाता है, तो वहां पर स्टोर्ड है। तो अगर आपका गट इज लाइक अ पाइप, इमेजिन इट इज लाइक अ पाइप, तो अगर वो लीक होगा तो लीकी गट, तो लीकी गट आपका सबकॉन्शियस भी उस पर लीक हो जाएगा। The subconscious will also start leaking from it, and it goes to mind. So whenever you are in a depression patient, whenever someone depression, the changing food will affecting because their guts start getting, or even in the normal positions, basically the gut is right, you will get the sattvic vichar, because the all the kachra which we are carrying will not start releasing faster and faster. Then you are in the state. So that state is not meditative state. That state is the state of equilibrium of your body. Now you are ready for the meditation to connect with the Shiva. So this is the Panchabhuta sadhana which we'll do in Panchabhut sadhana. तो पंचभूत साधना इज अबाउट दिस प्यूरिफिकेशन। साधना, साधना मतलब उसको साध लिया हमने, पंचभूत को साध लिया, राइट। तो दैट्स व्हाई वी डू अभिषेक। तो अभिषेक करेंगे मंदिर में तो हमारे पंच तत्व जैसे ही प्योर होंगे तो वी आर रेडी टू फॉर द साइलेंस, राइट। लाइक डेफिनेटली डिफरेंट सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ता है। So this is we are going to talk in the further classes, and the practical, how to apply it practically in this Shravan Mahotsav. Now come the Indriya. Let's, in the last, we have 5 minutes. Let me quickly complete it. 5 minutes, let me, and then we will experience it fast, and then we'll close the session. And we will see you tomorrow. So तो 5 इंद्रिया, तो ये जो शरीर होता है, अगर आप ये स्वस्थ शरीर है तो हम 5 इंद्रियों से दुनिया को कनेक्ट करते हैं, इस वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। तो अगर हमारा हमारा दिमाग इम्बेलेंस है, हमारा तत्व इम्बेलेंस, तो वी विल चिड़चिड़ लगेंगे, ये करेंगे। तो उस तरीके से हम दुनिया को कनेक्ट करेंगे, उस तरह से आपको एंजाइटी की, उस तरह से आप दुनिया को देखेंगे, उस तरह के आप कर्म क्रिएट करेंगे उस 5 इंद्रियों से। और जब आपका बैलेंस होगा तो उस तरह के आप कर्म क्रिएट करेंगे। दिस इज द फैक्ट।
बेसिकली आप सात्विक होंगे तो सात्विक तरीके आपकी इंद्रिया is the indriya is how we connect and how we take the action from your body, the panchbhut basically. So when you connect with the indriya, and I will tell you how tomorrow in the temple panchbhut and panch indriya से कैसे connect करते हैं टेम्पल में और कैसे उस साइलेंट स्टेट पे जाते हैं. तो एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हमको क्रेविंग होती है, कैसे इम्बेलेंस होता है हमारी इंद्रियों का. जैसे होता है कम इनटू योर सेंसेस, बोलते हैं ना, हाउ मेनी टाइम्स वी रियर कम इनटू योर सेंसेस, because when you are in angry, you want to take action, your whole consciousness is in the sense of action, the anger section, anger, and whole the senses want to express the anger basically. So they are not conscious, they are superimposed by this basically, right? तो we come on sense, तो जैसी सेंस में आते हैं तो हमको अच्छा मैं क्या कर रहा, राइट, when we come into sense. तो कैसे होता है, एक शॉर्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको. when we crave for the food, जब भी आपको क्रेविंग होती है, अरे यार मुझे तो, आपने अगर मीठा छोड़ा है, इफ यू डोंट वांट टू ईट स्वीट, व्हाट हैपेंस, the sweet come, you want to have it, definitely there is an imbalance, the body, there is a carbon and everything, all the different things. But when you see the sweets, what is happening actually, the whole sense, the whole awareness, your consciousness going into the sense of taste, concentrated, and all other senses, the sight, the touch, every senses is in the dormant state, and whole, so you will take the action, you will get the sweets. Now try this one, you know, whenever you get the sweets, just when you have any craving for anything, be aware of five senses. Look at the sky, आसमान को देखिए, आप किसी घर पे किसी चीज को देखिए, ब्रॉडर, जितना ब्रॉडर देखेंगे उतना अच्छा. हियर द साउंड, गाड़ी आ रही है, कोई आपकी मम्मी बोल रही है, कोई टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, हियर द साउंड. बी अवेयर ऑफ द स्मेल, घर में स्मेल आ रही है, कभी आपके गार्डन में तो फूलों की स्मेल आ रही है, यू नो. तो व्हेन यू बी अवेयर एंड बी अवेयर ऑफ द टेस्ट, रोल द टेस्ट टर्न, तो क्या होगा कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है जो उसमें जा रही थी पूरी की पूरी, वो स्प्रेड हो जाएगी. तो जो आपकी क्रेविंग थी 100%, वो 25% रह जाएगी, और 25 से जैसे 5 में डिवाइड हो गए तो लेस देन 25. तो यू विल फाइंड कि अचानक आपको पता लगेगा कि आपको, तो क्योंकि जो आप रस ले रहे थे एक जीवन का, जो सारा रस आप एक ही सेंस से लेना चाहते हैं, तो जो भी हम सारा रस एक ही सेंसेस से लेना चाहेंगे, तब अनकॉन्शियस इम्बेलेंस क्रिएट होता है. और जब हम जीवन का रस 5 सेंसेस से लेते हैं, फूड लेते हैं, जैसे हमको शिवो सर ने बताया 5 सेंसेस, उसको टच करेंगे, उसकी स्मेल करेंगे, उसको खाएंगे. तो व्हेन यू आर हैविंग 5 सेंसेस, आपको पता लगेगा कि आप जब 2 समोसा खा जाते थे, यू वर एंड अप ईटिंग 1 समोसा विथ टोटल सेटिस्फेक्शन. जो आपको 4 समोसे सेटिस्फेक्शन नहीं करते, और आप बोलते यार पेट तो भर गया, मन नहीं भरा. मन क्यों नहीं भरा? क्योंकि वो पूरे अवेयरनेस 5 सेंसेस, अगले सेंसेस तो रह गए उसको आनंद लेने के लिए. So when you have this samosa with 5 senses, in marriage, if you try it out, you will find out कि if you having all the dishes in the marriage, you will find out आप 2 डिश लेंगे, वो भी जब 2 लेते तो एक ही लेंगे, you will not waste the food and you will come out more than satisfaction with less food, because you will, in marriage you are enjoying the beauty of the marriage, enjoying the people, relationships, sky, touch, smell. So that is why the celebration will happen. And when you touch with the space in the state of Sharana, then उसकी कोई बात नहीं. So this is the session today, and I feel we don't have time to practice things, but this is the section practice, and be in the state of Shravan, be in the state of connect with these 5 elements, be conscious, live in consciousness,
leave this consciousness, leave this 5 element, Panchendriya, with consciousness. And that is what the Shivaradhana means. So whenever anyone say you, or whenever you feel, are you worshipping Shiva? You ask yourself, am I connected with 5 Panchatattva with awareness, consciousness? Am I connecting with this space? Am I living in awareness? Am I grounded in the space? If yes, Shiva Aradhana happening all the time. If not, be aware. So the purpose of this Shravan Mahotsav is the Mahotsav should happen not by playing DJ or playing some sound or only getting into rituals, but actually using these rituals to connect with Shiva and the celebration happening all the time in the universe. And let us align with this celebration together in the Shravan Mahotsav. So thank you very much for joining this session. And anyone in the team want to say, Nitika and anyone? So otherwise we'll close the session. Then you can talk about the program is starting on 4th of July. Okay. Just a small, we have 2-3 minutes. Okay, so we will start the program from 4. This is 21 days program. And in this program, we will have the, sorry, I forgot the what is upvas meaning. उपवास का मतलब होता है उप में वास करना, उप में वास, higher, dwell into higher consciousness. तो जब भी आप उपवास करें, it is not about eating or non-eating the food. The purpose of eating or non-eating so that आप उपवास कर सको, आप उप में वास कर सको, आप you can dwell into higher consciousness. If you are dwelling into higher consciousness by eating food itself, then you are in the upvas, state of upvas. But if you are not eating anything and you are not in the state of upvas, the dwelling into higher consciousness, you are not doing upvas. You are doing the fasting for the food, for the body. Sorry, it is the only physical body for the health. So please remember. So we will do that upvas. We will experience that upvas in this. Just a minute, discharge. This 21 days, so we will Shravan Somvar will experience why this Shravan Somvar happened, how it is connected to moon emotion. We will talk about it. We will experience it truly. We will experience connecting with Panchatattva. So it will give you the physical wellness, mental wellness as it is connected, and the spiritual, the Shravan, the Mahotsav. So let us celebrate that Mahotsav, Shravan Mahotsav. See you all tomorrow. So Jai Mahadev. धन्यवाद. Nitika. Thank you so much, Atin. Thank you everyone for joining. We look forward to having you join us tomorrow and also for our program from 4th of July. So thank Atin, you so much, Atin. Thank you.